Now, how this concept of component is going to help us in adding vector? हम लोग का एक्चुअल क्वेश्चन क्या था? हम लोग का पर्पस तो था कि ऐड करना ना वेक्टर को, और कोसाइन लॉ में क्या दिक्कत हो रही थी? लार्ज वेक्टर तो इशू था। यहाँ तो हम लोग केवल अब तक क्या डिस्कस किया? हाउ टू फाइंड कॉम्पोनेंट। सो अब क्वेश्चन क्या बचता है? हाउ दिस कॉम्पोनेंट इज गोइंग टू हेल्प अस इन डूइंग व्हाट? एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग लार्ज नंबर ऑफ वेक्टर। विल कम टू दैट, बट उसके पहले कुछ और भी तुमको सीखना होगा। नेक्स्ट लिखो, फर्स्ट क्लास में बताया था एक स्पेशल टाइप ऑफ वेक्टर है यूनिट वेक्टर्स, राइट? यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। अगेन सबका ऑब्जेक्टिव क्या है? कंपोनेंट का, यूनिट वेक्टर का क्या सीखना? हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। अल्टीमेट फाइनल ऑब्जेक्टिव हम लोगों का वही है। यूनिट वेक्टर के लिए सबसे पहले सिंबल इज दिस, instead of arrow we read this as cap or hat, either cap or hat. ठीक है? Point number 1, magnitude of unit vector is 1. Magnitude of unit vector is 1. Magnitude is 1. That's why that word 1 को यूनिट भी कहते हो ना? 1 unit means that number 1. So that's why this word unit vector. So every unit vector has what magnitude? 1. Every vector has, can you say that every vector has same magnitude? No. But what about unit vector? Same magnitude equal to 1. चूंकि वेक्टर है तो साथ में और क्या होना चाहिए? डायरेक्शन। नेक्स्ट लिखो डायरेक्शन। Direction is along direction is along direction of parent vector. पहले वो word लिख लो parent, then I will explain. Direction is along parent vector. Direction is along parent vector. ठीक है? Now what is meant by this? तो एक वेक्टर ऐसा ड्रॉ करो A, डिफरेंट डायरेक्शन में A, B, C, कुछ आर्बिट्ररी ऐसा डायरेक्शन, ऐसा वेक्टर शो कर लो उस पॉइंट के नीचे। वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C, व्हाटएवर डायरेक्शन यू विश। हो गया? नाउ दीज आर नॉट यूनिट वेक्टर्स। A के ऊपर एरो है ना? A कैप इज इन सेम डायरेक्शन एज वेक्टर A। सो फॉर A कैप कौन है पेरेंट? वेक्टर A। B कैप पेरेंट कौन है? वेक्टर B। C कैप पेरेंट कौन है? वेक्टर C। मीनिंग क्लियर हो गया? सो व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर? along parent vector. So vector A cap किसके along होगा? A के along। B cap किसके along होगा? B। C cap किसके along होगा? C। तो अगर तुम लिखते हो A cap, देख लो B cap, C cap, ये तीन वेक्टर है या यूनिट वेक्टर है? तो तीनों का मैग्नीट्यूड कितना है? 1। लेकिन डायरेक्शन सेम है या डिपेंड? A cap किसके along? A। B cap along वेक्टर B। C cap। अगर एक और वेक्टर हम यहाँ R कैप लिख दिए तो क्या होगा? along R। इफ आई राइट V कैप क्या होगा बताओ? F कैप। सो कोई इशू नहीं। क्लियर हो गया? सो मैग्नीट्यूड इज 1, डायरेक्शन इज। पॉइंट नंबर 3, यूनिट वेक्टर से A कैप इज डिफाइंड एज वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. If you divide vector by its magnitude, what you get? Unit vector. So, could say just get feel of this. B cap क्या लिखोगे बताओ? Right there. Vector B by A या B? C cap. So, how one can find unit vector? What you're supposed to do? Divide vector by its magnitude. Divide vector by its magnitude. Done. Point number 4. ऐसा लिखो, जब भी हम लोग डिफाइन किए, क्या यहां से ऐसा कुछ लिख सकते हो? देखो तो रीअरेंज करके, कैन वी डू दिस? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देख सकते हैं?
What is this? A number. Scalar. What is this? And what you get? So a scalar can be converted into vector or not? By doing what? Multiplying it with what? Vector or unit vector? So write that. नीचे वहीं लिख दो. ये important है. A scalar can be converted into vector. A scalar can be converted into vector. How? By multiplying scalar with unit vector. By multiplying scalar with unit vector. हो गया? Point number 5. Small I cap, small j. ये किसका सिंबल हो गया? यूनिट वेक्टर. और एक और and small k cap, small k cap, small k that is. They are unit vectors along positive x-axis, positive y-axis and positive z-axis respectively. Are unit vectors along क्या क्या? Positive x-axis, positive y-axis and positive z-axis respectively. समझ गए? Positive x, positive y and positive z-axis respectively. तो ये बहुत सारे नोटेशन, तुमको ये नोटेशन सब आगे मिलेगा तो केयरफुल रहना. आई कैप हमेशा किसके लॉन्ग है? किसके लॉन्ग? पॉजिटिव एक्स एक्सिस. बिकॉज देखो एक चीज बताओ हमको, इफ यू वांट टू डिफाइन अ यूनिट वेक्टर, तो डू यू नीड टू डिफाइन इट्स मैग्नीट्यूड और यू नीड टू डिफाइन इट्स डायरेक्शन ओनली? इफ यू से दैट दिस वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, तो क्या मैग्नीट्यूड बताना होगा तुमको या केवल डायरेक्शन बताना होगा? डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 होगा. So for unit vector, what is important? Magnitude or direction? So I cap is along what axis? Positive x. J cap? So बहुत बार फिजिक्स में जो अभी हम लोग आज एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ कर रहे थे, फाइनली ये देखो ड्रॉ करके, इंस्टेड ऑफ एक्स वाई व्हाट यू विल फाइंड, एक्स की जगह पे केवल आई कैप लिखा होगा, हो सकता है या नहीं? और वाई की जगह क्या लिखा हो? जे कैप. ऐसा हो सकता है. इट अमाउंट्स टू सेम थिंग. एक ही चीज़ है ना. सो कंपोनेंट जो हम लोग आज डिस्कस किए वो एक क्या है? स्केलर है. बट स्केलर को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? वेक्टर में. किसके हेल्प से? बिकॉज आज तुम ये सीखे, यहीं से स्टार्ट किए थे. ये वेक्टर ए है. फाइनली ये डायग्राम ड्रॉ करो. दिस इज ए वाई और ये क्या है? ए एक्स. ड्रॉ दिस डायग्राम. बिकॉज बार बार हम वापस उसी क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि हाउ दिस कॉम्पोनेंट इज गोइंग टू हेल्प मी इन एडिंग और सबट्रैक्टिंग वेक्टर्स. वही इशू है ना. ये एक ट्रायंगल दिख रहा है. कैन वी यूज ट्रायंगल लॉ, ग्राफिकल मेथड? कैन वी राइट दिस? यस. ठीक से बताओ. पहले लिखो ऐसा. राइट दिस. पहले राइट. Can we write this? We have to add 2 vectors. What you are adding here? Component is vector or scalar? You are adding 2 scalar and what you are getting? Possible or impossible? So this is not correct. This is not correct. नहीं होगा ना. So we need to convert component into what? Vector. So ऐसा लिखो. We need to convert component into vectors. और कौन हेल्प करेगा
to convert scalar into vector. So we can do that with help of which vector? Unit vectors. लिख दो. We can do that with help of unit vectors. तो अब तुमको क्या सीखना होगा बताओ? Writing vector in terms of its components. Writing vector into, I mean, with help of its, taking help of unit vectors. तो ऐसा लिखो. We need to write vector in terms of its component. We need to write vector in terms of its component by taking help of unit vector. So this we'll discuss in next class. ये हम लोगों का objective होगा.